Welcome freelancers, this is Zahin and I'm very excited today because this is the very first session of my freelancing course. I've been receiving a lot of questions regarding the types of jobs available on the freelance platforms and who can do freelancing. So आज का जो topic of focus है वो इसी के ऊपर होगा. Whether students can do freelancing, can doctors do freelancing, can chartered accountants do freelancing, can lawyers do freelancing, can housewives do freelancing. बस सबसे पहले आई विल टेल यू कि वो दो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो कि 90% ऑफ द लोग कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अ बिट लो पेइंग वन, इसमें एफर्ट ज़्यादा है बट इट पेज यू लेस, एंड दैट इज़ डेटा एंट्री. सो देयर क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स जो कि इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट करके ऐड कर सके इन एक्सेल फाइल्स. सो पर्सनली आई विल नॉट रिकमेंड दिस, बट इफ यू आर विलिंग टू गेन सम स्किल्स, द सेकेंड बेटर ऑप्शन इज कंटेंट राइटिंग. Writing an article, a blog, research writing, academic writing. So their clients who are looking for freelancers जो कि एक अच्छे articles जो हैं वो write कर सके अपनी websites के लिए, अपनी agencies के लिए. Good paying clients, for example, news agencies. For example, the ones working for magazines. The ones who need Amazon affiliated articles. And since 90% of the freelancers can do this, so I will have a separate series of sessions just on writing an article and blog. But remember, there are some basic skills that you need and require. जैसे search engine optimization की knowledge होना बहुत ज़रूरी है. Traffic conversion skills, you need them. And then on top of that, there are also some tools that check your grammar, prepositions, articles, spelling. So I will also be sharing some tools in those sessions as well. But I will start with the basics ताकि आपके लिए जो base है वो strong हो. Because अगर base weak होगी, then you will find problems and struggle in your freelance career ahead. इसके अलावा social media marketing, digital marketing. So there are clients who are looking for freelancers who can actually manage their social media accounts. To manage their Facebook accounts, Instagram account, Snapchat account. And the main responsibilities in that is usually you have to post regularly और उसके अलावा मार्केटिंग एड्स आपने पोस्ट करने होते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, लॉयर्स. कैन लॉयर्स ओनली वर्क इन द सुप्रीम कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स? नो, दे कैन एक्चुअली ऑल्सो वर्क एज कंसल्टेंट्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स. उसके अलावा इफ दे डोंट वांट टू प्रोवाइड कंसल्टेंसी, देन दे कैन गो फॉर कंटेंट राइटिंग. टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हैविंग एनी बैकग्राउंड, उनका चाहे मेडिकल बैकग्राउंड है, इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, all these students can actually go for content writing, writing articles, writing blogs. And अगर आपकी उर्दू या हिंदी अच्छी है, then you can also become a translator. So there are clients who pay really good or they don't want to rely on Google Translator, बल्कि उनको actually बंदा चाहिए होता है जो कि proper translation कर सके. So this is also an option. और अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, then you can also become voice over artist. So there are clients who basically want people कि उनकी आवाज़ जो है उनके skits या videos में इस्तेमाल हो. Moving forward, if you talk about accountants, accountants can also provide consultancy. If not, they can always go for article writing. Content writing सबके लिए है. And if you are an artist, if you like designing stuff, then you can go for graphic designing or logo designing. There are clients who pay you for designing brochures, leaflets, flyers, even company logos. और अगर हम चल जाते हैं technical side पे, more like in computer science, so there are options like web development and mobile development, game development, IT support administration. तो computer science की तो बहुत ज़्यादा jobs मिल जाती हैं. But the thing is कि आपको market में आने के लिए you have to need some basic skills or knowledge and how to enter the market. Because there's a lot of competition, cutthroat competition है. I'm just gonna keep it back. So regardless of your profession, you can start freelancing. Just you have to define your niche कि किस एरिया में आपने काम करना है. Now let me show you practically what are the jobs available on this platform. And this platform is called Upwork. And so this is the search bar. And if I search for example, writer. So here you can see there are like more than 7,000 jobs available. Plan and write blog content,
hiring script writer for YouTube channel, looking for an experienced writer to edit 5 pages report. तो बहुत से बेसिकली आपको कंटेंट मिल जाएगा लिखने के लिए. एंड इफ आई सर्च फॉर ब्लॉग्स, तो लेट्स सी कितनी जॉब्स आती हैं. तो मोर देन 11,000 जॉब्स, ऑलमोस्ट 12,000 जॉब्स बेसिकली अवेलेबल हैं ऑन राइटिंग अ ब्लॉग. तो कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. एंड दिस इज़ ओनली वन प्लेटफॉर्म. बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं. एंड इफ़ यू सर्च फॉर डिजिटल मार्केटिंग, और इस फील्ड के अंदर अगेन मोर देन 7,000 जॉब्स. तो जॉब है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड. और उसके अलावा और देखते हैं गूगल शॉपिंग एक्सपर्ट नीडेड फॉर द न्यू एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट रिक्वायर्ड. और साथ साथ आ रही है बेसिकली जो क्लाइंट है वो कौन सी कंट्री का है. एंड इफ आई सर्च मोर एंड अब मैं सर्च करता हूँ लाइक वेब डेव. तो वेब डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से जॉब्स, कितनी जॉब्स हैं. तो अबाउट 730 जॉब्स आ रही हैं. बट इफ आई सिंपली सर्च फॉर वेब, तो ज़्यादा जॉब्स पॉपअप स्टार्ट हो जाती हैं बिकॉज वेब के अंदर फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है. तो बेसिकली यू कैन यूज दिस कीवर्ड्स और रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स. नाउ लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल. अगर हम सर्च करते हैं ग्राफिक, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब्स जो हैं वो काफ़ी स्टार्ट हो जाएंगी. हियर यू कुड सी पहली जॉब क्लाइंट जो है बेल्जियम का है. ग्राफिक डिज़ाइनर, क्रिएट इन्फॉर्मेशन हाउ टू गाइड्स, क्रिएट वीकली सोशल मीडिया पोस्ट. तो इसमें थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी ऐड है. तो कुछ जॉब्स ऐसी भी होंगी जिसमें आपको मल्टीपल स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी. So there are tons of jobs available on these freelance platforms. So I would recommend spend some time, think about the areas or domains जिसमें आप जॉब करना चाहते हैं. And it is a very good idea to actually start searching for the jobs on these platforms. Create a profile, start looking for the job you are interested in. So my next session will be about how to build a profile on these platforms. So this concludes our today's session. And if you find this information useful, or if you have any comments, any concerns, please write us in the comment section. Stay motivated, keep working hard. I want you guys to succeed. Until next time, take care.